Good morning, all of you. So, we have started our first chapter, that is dimensional analysis. In that chapter, the next topic for today is principle of homogeneity. Okay, we will understand this principle now. Okay, if we consider the case v square is equals to u square plus 2as. Okay, so we have to prove is that whether this formula is dimensionally correct or not. Okay, since यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द डायमेंशंस फॉर ईच ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटली. ओके, मैंने लिखा वी स्क्वायर, वी का डायमेंशन इट्स वेलोसिटी, सो एल टी माइनस वन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर टी माइनस टू. Okay, now next physical quantity is u square, that is also the velocity only, so lt minus 1 whole square, that is l square t minus 2. individuality will be right. Okay, अलग अलग लिखोगे आप. ठीक, now 2as, since 2 is the constant quantity, so we will not write the dimension for that, so we will take as now. A is acceleration, that is equals to lt minus 2, and distance is this distance is L. Okay, so which comes out to be L square t minus 2. ठीक है, हमने क्या किया, हमने इनको सेपरेटली लिखा अलग अलग. अब ये तीनों क्या है, सेम वैल्यू आई है, डायमेंशन इज सेम, हैंस दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. सो जो आप इनको अलग अलग लिख के, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लिख कर इसको प्रूफ कर रहे हैं. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, so the question for today is, first we have done that one now, we have converted 1 Newton into dyne, that is SI unit of force into CGS unit of force. So today what we will do, we will convert, the question for today is, we will convert an energy of 1 joule into ERG. Okay, since this joule, okay, since this joule is the SI unit of energy and this one is the CGS unit of energy. Okay, so what is the dimension of energy? Energy dimension is ml square t minus 2. Okay, okay, this is the dimension of energy ml square t minus 2. So in SI unit, energy mass we will take 1 kg. Okay, and length we will take 1 meter, time we will take 1 second, and in ERG mass we will take 1 gram, length we will take 1 centimeter, time we will take 1 second. So this one m1 l1 t1 m2 l2 t2. Okay, now formula to convert one unit into another unit is n2 is equals to n1 m1 upon m2 power a, L1 upon L2 power B, okay, T1 upon T2 power C. So this N1 is this number. हमें कितनी जूल इतनी एनर्जी में कन्वर्ट करने हैं, 1 जूल. So we will write here 1. M1 is 1 kg, M2 is 1 gram, A is resemble to this one. आप इससे कंपेयर करोगे, मास की पावर क्या है, 1. So we will write here 1. L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter, and this B will be equals to 2. T1 1 second, T2 1 second, and this power will be minus 2. Okay, now 1 kg we will convert the 1 kg into gram, that will be is equals to 1000 gram upon gram power 1. 1 meter 100 centimeter upon 1 centimeter power 2. This 1 second by 1 second will be cancelled, and this comes out to be gram by gram, centimeter by centimeter. 100,000 power 1 1000, 100 square 100 into 100. Okay, this 1 2 3 4 5 6 7 10 power 7, hence 1 joule is equals to 10 raised to power 7 ERG. This is your conversion of 1 joule into ERG. Okay, now next question is, fourth question is, we have to there is equation 1 upon 2 mv square is equals to mgh. ठीक है, where m is the mass, v is the velocity, g is the acceleration due to gravity, h is the height. So we have to check whether this equation is dimensionally
correct or not. So first we will take LHS. So LHS is 1 upon 2 mv square. Since 1 upon 2 is a constant quantity, so we will write mv square, where m is the mass, v is the velocity, lt minus 1 square. Okay, this comes out to be m lt minus 2. Okay, now RHS we will take mgh, where m is the mass, g is the acceleration due to gravity, which comes out to be lt minus 2, and h is l. When we arrange this equation, it comes m this l square and t minus 2, and sorry, here l square will come. Okay, so this is the first and this is the second, since LHS is equals to RHS, hence this one is dimensionally correct. Okay, now if we take the equation, if we take this question, k is equals to 1 upon 2 mv square plus ma. ठीक है, we have to prove this equation is whether dimensionally correct or not. So in this we will use the principle of homogeneity. Okay, we will use the principle of homogeneity since there is addition sum. So we will take k. K is kinetic energy. Okay, and the energy the dimension of energy is ml square t minus 2. Okay, now we will write this one since half is constant, so mv square, this m lt minus 1 square, so ml square t minus 2. Now ma, m is mass, a is acceleration, lt minus 2, so it comes out to be mlt minus 2. Okay, okay, since the dimension of this 3 are not equal, hence they are not dimensionally correct. ठीक है. Okay, this is your next question. Okay, we have completed that part dimensionally, that dimension 1. So the next part of that chapter is errors of measurement. Okay, now what do you mean by error? So error is defined as errors. They are defined as the difference in the true value and the measured value of a quantity. ठीक है, ये डिफरेंस है लेबोरेटरी में आप जो वैल्यू मेज़र कर रहे हो, ठीक है, और जो उसकी ट्रू वैल्यू है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है आपके मेजरमेंट में आया हुआ डिफरेंस, दैट इज एरर. सो एरर आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड वन random error, okay, and third one is this gross error. Okay, now we will learn about this error turn by turn. Okay, this is all about systematic error. In systematic error, there are those errors that tend to be in one direction. Either they will be positive or negative, which mostly occurs by your system or by you by taking the experiment. Okay, now the first point in this point of systematic error is instrumental error. Instrumental error is it is occurs due to imperfect design और मैन्युफैक्चर और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है कि उसका डिज़ाइन इम्परफेक्ट हो, या मैन्युफैक्चरर से कोई प्रॉब्लम हो गया हो, या कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो. कैलिब्रेशन मीन जब आप उसका एडजस्टमेंट करते हो, लीस्ट काउंट वगैरह ये सब चीज़ हम एडजस्ट करते हैं, देन दैट एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. सेकेंड इज इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप इम्परफेक्शन मीन्स अगर आप जैसे व्हेन यू आर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, आप थर्मोमीटर को आर्मपिट में लगाते हो, ठीक है, दैट थर्मोमीटर विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, एंड ड्यू टू दैट द करेक्ट टेम्परेचर यू विल नॉट गेट. सो दैट वन इज योर इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. नाउ नेक्स्ट वन इज पर्सनल एरर. पर्सनल एरर इज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक है, आप इनएक्सपीरियंस हो,
फर्स्ट टाइम कर रहे हो, देन दैट ड्यू टू दैट द एरर्स विच अकर दैट इज़ नॉन एज पर्सनल एरर, आपकी वजह से हुआ है, ऑब्जर्वेशन लेने में प्रॉब्लम हो गई है. सेकेंड इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉसेस. ठीक है, एक्सटर्नल कॉसेस लाइक व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, pressure, humidity, wind velocity, that factors will occur then due to that external causes. Now next, least count error. Least count error is, since you have done the experiment for the vernier caliper na, so for that vernier caliper firstly we will adjust its least count. Least count means the smallest value that can be measured by a measuring instrument. ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में. द लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर. इफ़ इट इज़ नॉट करेक्ट, आपके आगे की सारी रीडिंग्स में प्रॉब्लम्स आएगी. सो दैट वन इज़ योर सिस्टमैटिक एरर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी दैट इज़ रैंडम एरर. ओके, now the next topic is random error. This all about our random error. So random error is which अगर irregularly, ठीक है, वो रैंडम होता है. इट कैन बी डन इन द फॉर्म दैट यू चेंज द साइन चेंज कर दिया आपने पॉजिटिव से नेगेटिव, और यू चेंज द साइज. ठीक है, तो रैंडम एरर कैन बी पॉजिटिव एंड द अदर टाइम दे मे बी नेगेटिव. सेकेंडली, इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड अ चांस एरर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप बार बार जो रीडिंग्स लेकर आ रहे हो, ऑब्जर्वेशंस जो आपकी आ रही हैं वो बार बार डिफरेंट आ रही हैं. ठीक है, तो रीडिंग्स डिफरेंट होगी तो आप फाइनल रीडिंग किसको लिखोगे. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स. आप बहुत सारी रीडिंग्स लोगे, एटलीस्ट यू टेक 5 or 6 रीडिंग यू विल टेक. सो फाइनल रीडिंग व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. आप उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करोगे और वो जो मीन आएगा दैट विल बी योर एक्यूरेट रीडिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू योर which is very close to your true value. Okay, so this one is your random error. So remember that one, to avoid the random error, what we will do, we will take the n number of reading and we will calculate the arithmetic mean of that n reading, and that arithmetic mean will be very close to your accurate reading. Okay, the next one we will see that is gross error. Okay, our next topic is gross error. So what does it mean? It arises on account of carelessness of the observer. ठीक है, अगर observer ही carelessness show कर रहा है. First one, while taking a reading without setting it properly. Second one, taking the observation wrongly without caring for the sources of errors and the precautions. Recording of the observation wrongly. So these are all the carelessness of the observer, and they can only be minimized only when the observer is sincere and mentally alert. Okay, so we have seen 3 types of error: systematic, random and gross error. So the numerical for this part we will do in the next class. Okay, thank you class.